Hello everyone, welcome to Rising Sun Premier School online classes, class 7th and 8th. Children, today we are going to start a new chapter of class 8 and 7th, same topic and same chapter, the state government. So let's start according to the chapter and topic state government. Class 7th Civics, chapter number 3, State Government. Rajya Sarkar. Okay children, now let's start with the notes. India is one of the biggest democratic countries in the world. It is called a union of with 29 states and 7 union territories. There are 2 levels of government where the power is divided, the center and the state. मीन हमारे इंडिया में 2 लेवल की गवर्नमेंट है और इनकी पावर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट and the second is state government. Okay, the constitution has distributed the power and function between the 2 governments. The governments are made up of the 3 organs. Governments के 3 organs बनाए गए हैं. Look at this government. Mainly 3 organs of government. First, legislature. Second, executive. And third is judiciary. Okay. Now, first is legislature. Okay. लेजिस्लेचर को हम आगे समझेंगे. A state legislature usually consists of the government of the state. Every Indian state has its own legislature. A state legislative usually consists of the government of the state. लेजिस्लेचर का जो वर्क होता है, लॉ मेकिंग बॉडी इन आवर कंट्री. ओके, नाउ द गवर्नमेंट मेनली 3 ऑर्गन्स में डिवाइड है. फर्स्ट द लेजिस्लेटिव एंड द सेकेंड इज द एग्जीक्यूटिव and the third is the judiciary. Okay, now the first is the legislative. Legislative का वर्क जो होता है, वर्क ऑफ मेक्स लॉ. Okay, and the legislative divided into 2 houses. First, legislative council and then second is legislative assembly. Legislative council also called Vidhan Parishad mean upper house and legislative assembly also called Vidhan Sabha mean lower house. Understood? Repeat again. The government has mainly 3 organs. First, the legislature mean the legislative. Second is the executive. And the third is the judiciary. Now the first one is the legislative. Legislative का वर्क जो होता है, वर्क ऑफ मेक्स लॉ. Okay. Now, the legislative
has divided into two houses. First, legislative council, and then second is legislative assembly. Legislative council, also called Vidhan Parishad, mean upper house. Legislative assembly, also called Vidhan Sabha, mean lower house. Understood? Okay, children. Vidhan Sabha means legislative assembly, and Vidhan Parishad mean legislative council. Okay. Now, second is executive. Executive means जो means implements law. जो लेजिस्लेटिव जो इनका जो वर्क होता है लॉ मेकिंग लॉ को बनाना, तो ये एग्जीक्यूटिव क्या करती है? एग्जीक्यूटिव फर्स्ट एग्जीक्यूटिव मीन्स क्या होता है? एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका. ओके. एंड लेजिस्लेचर मीन्स विधानसभा. ओके. तो कार्यपालिका का वर्क क्या होता है कि जो विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव जो होते हैं वो लॉ को बनाते हैं, तो उनको इम्प्लीमेंट्स करती हैं. इम्प्लीमेंट्स कौन करता है? एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका इम्प्लीमेंट्स करते हैं. ठीक है. देन थर्ड इज द जुडिशरी. जुडिशरी इंश्योर दैट द लॉ आर इम्प्लीमेंट. और ये जो इन्होंने जो इम्प्लीमेंट्स किए हैं इन जो में लॉ जो बने थे, एग्जीक्यूटिव ने इन इम्प्लीमेंट्स को इन लॉ को इम्प्लीमेंट किया है. एंड द जुडिशरी इंश्योर करती है सारे लॉ को इम्प्लीमेंट्स को. ठीक है. इंश्योर करती है. जुडिशरी का जो वर्क होता है वो लॉ को इम्प्लीमेंट्स करना होता है यानी इंश्योर करना होता है. एग्जीक्यूटिव जो होती है, एग्जीक्यूटिव इज दैट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच इन्फोर्सेस द लॉ मेकिंग law made by the legislature run the administration of the country. Okay, mean जो लॉ लेजिस्लेचर बनाता है उसको वो एडमिनिस्टर करते हैं और रन करते हैं कंट्री में. ओके. अंडरस्टूड? ये इनका वर्क होता है एग्जीक्यूटिव का. ओके. नाउ द जुडिशरी. Judiciary work is the judiciary is that organ of the government which is responsible for settling disputes through interpretation of law. It also protects the rights and liberties of an individual. Judiciary is an essential feature of a democracy. The judicial system of any country is composed of court, judge, and justice. Okay? Now, अब हम इसे थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं आगे. The state legislature. Children's, every Indian state has its own legislature. A state legislative usually consists of the governor of the state and one house of legislative called Vidhan Sabha, mean legislative assembly. Some states have one house while other have two. ठीक है. Where there is one house, it is called legislative assembly, and where there two houses, the upper house is called legislative council and the lower houses is called legislative assembly. देखिए चिल्ड्रंस, कुछ स्टेट में जैसे कि कुछ स्टेट में वन हाउस चलता है. तो जो वन हाउस होता है यानी कि मैं आपको बताऊंगी कि कहने का मतलब ये है कि सम स्टेट has one house of legislative called the विधानसभा. कुछ स्टेटों में एक ही हाउस चलता है, ये मतलब एक ही हाउस के अकॉर्डिंग सरकार चलती है, जिसे हम विधानसभा के रूप में कहते हैं यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली. और कुछ स्टेटों में
2 हाउसेस चलते हैं, जैसे पहला तो लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स विधानसभा और सेकंड लेजिस्लेटिव काउंसिल मीन्स विधान परिषद। कुछ स्टेटों में ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा वर्क करती है एंड सम स्टेटों में 2 हाउसेस वर्क करते हैं एक साथ। ओके, नाउ द विधानसभा एंड विधान परिषद क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूं मैं। द विधान परिषद और द लेजिस्लेटिव काउंसिल द अपर हाउस ऑफ द असेंबली। The tenure of a member in the Vidhan Parishad is 6 years. Every 2 years, 1/3 of member retire and fresh one are elected. Okay, children. And the Vidhan Sabha or the Legislative Assembly is the lower house of the Assembly. It consists of elected representative of the people. They are elected directly बाय द पीपल। ये डायरेक्टली लोगों के थ्रू अपॉइंट होते हैं। ओके, विधानसभा के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो डायरेक्ट पीपल उनको इलेक्ट करते हैं। ओके चिल्ड्रंस, नाउ वी विल अंडरस्टैंड क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर। ओके, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। He should not be less than 25 years of age. He should not be of unsound mind. He should not be a criminal, bankrupt, or hold any office of profit. He should be a registered voter. Okay, children? Now, second organ is the executive. Executive is that organ of the government which enforce the law made by the legislature and run the administration of the country. Okay? And qualification of executive representative: in order to be elected president, a candidate must have the same qualification as a member of the Lok Sabha. However, he and she must be at least 35 years of age. Okay? Now, the judiciary. The judiciary settles dispute between individual, between citizen and the government, between state and union government, and between various states. Now, the qualification of judiciary representative: a judge of the Supreme Court must be a citizen of India. He must have legal trained and background. He must be a judge of a high court or of the 2 or more such court is succession for at least 5 years, or an advocate of a high court or of 2 or more such court in succession of for at least 10 years. Okay children, now that's it. Finish the topic. So bye bye. Thank you very much.